Hi everyone, my name is Shivani and let's start with today's current affair. As I read the quotation today in the morning, and it says that today's news, today tomorrow's answer, and that's so true because if we are aware of our history, if we know that what is going through this world with like ourselves, right, so we can make the changes, right? And once a philosopher also said that revolutions comes with an idea. With that idea, tells us, right, what kind of changes we want, how we can make those changes, what revolution is, right? So if we will not have these conflicts, then we won't move towards conclusions, we won't move towards revolutions, right? And this is why these current affairs are very important, because knowing the present always shapes the future, right? So now so now let's understand today's first current affair. So India's disaster response, a slippery slope for federalism. Okay. So why we are reading about this, what this news is about, right? And what this federalism is. First of all, let's understand what this federalism is. Okay. So when we talk about federalism, so it is division of power, right? So this division of power with center and with state. Right, so when we talk about this division, so there is no like boss in here, right? There is no like employee in here, so everyone works together, right? So both levels like get their own power, both are independent in their own sector, right? It's like that they are working together as a one team. ठीक है, तो फेडरलिज्म एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि हमेशा सिर्फ एक गवर्नमेंट, राइट, इट कैन नॉट वर्क, वी लाइक नीड some management, right? Someone who like work together, right? So countries like India, USA, Canada, Australia, right, they use federalism. क्यों use करते हैं? क्योंकि एक तो अलग अलग लैंग्वेज होती है, such diversity, and to manage this diversity at such large scale, right, it's very tough. So this is why this division of power is introduced to us. अलग कल्चर है, अलग रीजन्स है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, राइट, इन सबको मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. सो दिस इज व्हाई फेडरलिज्म अलाउज ईच रीजन टू रन इट्स ओन लोकल मैटर्स, राइट? लाइक जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर, हेल्थ. सो व्हाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल्स नेशनल मैटर्स, वैसे ही डिफेंस, करेंसी, राइट, फॉरेन अफेयर्स, दे हैंडल्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर अस. अब फेडरलिज्म इन इंडिया की बात करें तो इट इज लाइक इट फॉलोज द कोऑपरेशन, लाइक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. Now this cooperative federalism, as its name says, that center and state, like both of them like are going to work together. They won't be split, right, but they'll be work together, right? And this also has feature of like Kasi federal. Now what this Kasi federal is? So when we talk about different list होते हैं, exactly अलग अलग list होते हैं, yes. So as this cooperative federalism, so it means that center and states they work together, right? And this Cardiff federal, that is federal with unity bias. इसका मतलब होता है कि center जो है कभी कभी अपने पास ज्यादा power ले लेती है state से, right? Special during emergencies. ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे भी हम देखा जाए तो हमारे पास कुछ कुछ स्केड्यूल्स है, राइट? लाइक यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, राइट? देन आर्टिकल 245 and 255, that is distribution of legislative powers also. So whatever articles and these rules and regulations that I'm asking, and these schedules that I'm mentioning, please make sure that you're writing it down, because only then you'll be able to divide these current affairs, that in which subject you have to put it, right? So make sure that you are writing all of these together. अब जब हम बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट की, स्टेट लिस्ट की और कंकरेंट लिस्ट की. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट फेडरलिज्म इज एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. ओके, अब व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, व्हाट्स द न्यूज़? Okay. So India's disaster response, a slippery slope for federalism. अब imagine India as big family, इतने सारे members हैं, ठीक है? The state are like grown-ups children, like who have their own responsibilities, and center is like head of the family, right? Who is going to decide कि कैसे decisions लेने हैं, how we have to manage it, and if state faces certain situations, so center is going to come up and help them, right? So this is how it works together. Both are like the team, right? So the state responds first whenever there is a problem, so the state it responds first, and the center steps in when the situations very become like too big and it's very tough to handle. ठीक है, तो क्या होता है, like this is the spirit of cooperative federalism, what we call to this cooperative federalism. Again, mentioning all these keywords are important. This is what your use will make unique.
Writing this down will not give you answer. These keywords are there which will help you to analyze in which subject it will go, right? In which paper it will go. I hope it is clear to you. तो अब क्या हुआ कि reality जो है थोड़ी थोड़ी shift हो रही है, you know, the reality is shifting because there is this one incident which happened, and this incident happened in Wayanad, Kerala. तो क्या हुआ यहाँ पे? Any idea? तो यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ, ठीक है, एंड दिस क्लियरली शोड कि कितना ज्यादा गैप है सेंटर और स्टेट के बीच में, राइट? अब इंसिडेंट व्हाट हैपेंड दैट इन 2024 वायनाड सफर्ड सेवरल लैंडस्लाइड्स, ठीक है, एंड इट caused like massive damage, around 2200, destruction of 2200. Now the state had suffered for this number 2200, ठीक है. अब इतना गैप था. अकॉर्डिंग टू द रूल्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 में आया था, क्या होना चाहिए था कि सेंटर शुड सपोर्ट स्टेट व्हेन द लॉस इज एक्सट्रीम. हमेशा जब भी एक्सट्रीम लॉस होगा तो हमेशा सेंटर को स्टेप इन करना पड़ेगा एंड दे हैव टू हेल्प स्टेट, राइट? दिस वी आर अवेयर ऑफ, ठीक है. एंड द स्टेट, यू नो, स्टेट ओन्स फंड्स आर नॉट इनफ, सो सेंटर शुड स्टेप इन. ये पहले क्लियरली मेंशन किया गया है. लेकिन सेंटर ने जो रिलीज किया फंड, वो रिलीज किया सिर्फ 260 करोड़ का, 260, not even 11%, right? Barely 11% you can say, right? So ये this people started asking questions. If the center steps in so little, even in such a major disaster, what exactly the cooperation here? जो कोऑपरेशन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? अगर सेंटर हमारी हेल्प कर ही नहीं रहा है, 11% भी नहीं है ये इसका, राइट? कहाँ 2200 करोड़ एंड वेयर दिस 260 स्टैंड्स, वी ऑल नो दैट, राइट? तो जो हम कोऑपरेशन की बात करते हैं फेडरलिज्म में, वेयर इट इज एग्जिस्टिंग, राइट? सो दिस शोज द गैप बिटवीन द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वी मेड ऑन द पेपर एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड रियलिटी, right? I hope the news is clear to you that what we are talking. Now we are going to relate it further. Okay. अब हमें ये पता चल गया कि इसके बीच में कितना ज्यादा गैप था, क्या फंडिंग थी, लाइक वी नो द बैक स्टोरी, व्हाट दे वर फेसिंग, एवरीथिंग इज क्लियर टू अस. ओके. अब दिस गैप बिटवीन असेस्ड डैमेज एंड द एक्चुअल एड इज नॉट स्मॉल टेक्निकल एरर, बल्कि ये रिवील करता है और ज्यादा डीपर प्रॉब्लम. क्या डीपर प्रॉब्लम है कि सिस्टम आज भी जो है वो कम और क्लियर काम नहीं करता है. ऑब्जेक्टिव रूलिंग इज नॉट देयर, राइट? जितना भी डिस्क्रिप्शन पे काम हो रहा है, द ऑब्जेक्टिव रूलिंग इज नॉट देयर, राइट? एंड द सेंटर डिसाइड्स दैट हाउ मच मनी द स्टेट विल गेट. सेंटर डिसाइड करता है, राइट? एंड व्हेन इट विल बी रिलीज, ये सारी चीजें सेंटर डिसाइड करता है. एंड वेदर द डिजास्टर क्वालिफाइज फॉर, यू नो, एडिशनल सेंट्रल सपोर्ट और नॉट, अगर वो चीज करता है भी या नहीं, ये सारी चीजें सेंटर डिसाइड करता है, राइट? नाउ द रिक्वायरमेंट वाज देयर, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी द सपोर्ट वाज नॉट गिवन इनफ, राइट? सो दिस टेल्स अस व्हाट अबाउट द गैप. सो दिस क्रिएट्स अ power imbalance. State cannot predict how much help they will get or when their financial stability, you know, becomes shaky after big disasters. So instead of having these equal, say, states feel very, you know, dependent on the state's goodwill, which defeats the, you know, this purpose of federal structure जो हमने अभी discuss किया in the previous slide, right? This somewhere like tells us about the ground reality, like how exactly we are working towards the rules and regulations that we made, right? We implemented and then we are not following it, right? So real danger is there, like it lies in the future. अब अगर state like center is not helping to the state, so what the problem is, state is like trying their best to develop themselves. Now we don't have much say in natural disaster. We can take precautions, we can take measures, we can help to reduce it, but then natural disaster is something that we don't have a say in it, right? It will happen eventually, we cannot do anything about it. But अगर हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी, स्टेट की डेवलपमेंट नहीं होगी, व्हाट विल हैपन, अगर सेंटर बीच में मर्ज नहीं कर रहे हैं अपनी चीजें, इज नॉट फंडिंग स्टेट इनफ, तो इट विल बी लाइक, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई आदमी खड़ा होना चाह रहा है, राइट? वंस दैट पर्सन, यू नो, ट्राइज टू गेट अप और कोई से वापस नीचे गिरा देता है. सो सेम थिंग इज नेचुरल डिजास्टर. तुम जितना डेवलपमेंट करने की कोशिश करोगे, नेचुरल डिजास्टर आएंगे एंड इट विल रूइन यू, राइट? सो वी नीड हेल्प, स्टेट नीड्स हेल्प, लेकिन सेंटर की तरफ से वो इनिशिएटिव अच्छे से नहीं लिया गया इन दिस न्यूज. दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग अस. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो the real danger, as I said, that it lies in future, क्योंकि climate change is making disaster, you know, they are coming more frequent. और अभी तो हर दूसरे दिन हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है in many years. कल ही हमने पौंडीचेरी का पढ़ा था, right? So there are so many disasters which are happening and so many precautions that we are taking, so many fundings that we are, you know, using, so many resources that we are developing, right? Because of these reasons. लेकिन this financial stability becomes very shaky after these bigger disasters. So instead of having equal say, you know,
between state feel very dependent on the center's goodwill, which defeats the purpose of a federal structure, right? क्या होना चाहिए कि दोनों इक्वल होने चाहिए, बस ये है लाइक दोनों के पास अलग अलग पावर्स है, बस ये है कि जब भी स्टेट को जरूरत पड़ेगी सेंटर इज गोइंग टू स्टेप इन, राइट? सो the worry exposed in the article is not just about like money, it is about that India's constitutional, right, balance, like how it should be balanced, and it's big, disaster management becomes a unique tool for centralized of the like all the decision making, the spirit of federalism makers, a system originally designed as a like partnership slowly becoming like one sided. So and as a disaster grows, this imbalance becomes more risky क्योंकि यार दोनों के बीच में cooperation नहीं होगा, right? Then it will be a problematic for the federal government that we are talking about. I hope it is clear to you. Okay. So I hope that you understood what the problem is कि 2024 में वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ, right? So 2024 this वायनाड district in Kerala, right? It faced severe landslide due to heavy rainfall, ठीक है? अब this estimated loss is like 2,200 crores, ठीक है? तो property को damage हुआ, infrastructure को damage हुआ, agriculture को damage हुआ, right? So center released assistance only 260, roughly 11% of assessed losses. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ये गैप शो करता है हमारा एसेस डैमेज का और एक्चुअल एड प्रोवाइडेड से, ठीक है, कि कितना एक्चुअली प्रोवाइड किया गया और कितना एक्चुअल लॉस हुआ था, राइट? तो जब भी हम बात करते हैं इसकी कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे है, क्यों है, तो इट इज गवर्न्ड बाय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व्हिच केम इन 2005. आई होप दैट यू आर अवेयर ऑफ इट, काफी बार मैंने क्लास में मेंशन भी किया है, एंड प्लीज मेक श्योर, राइट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट प्लीज write all these keywords down. Like there is no like point of reading these news if you are not coming up with these keywords, if you are not writing it down, if you are not knowing the history, if you are not knowing the management, if you are not knowing that how the things would have been different if you would have like done something, right? So put yourself in that particular situation and try to analyze it. That's how you're going to learn the current affairs. अब बात करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में तुम्हें पता चल गया, 2005 में आया था, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि असाइन करना सेंटर को और स्टेट को, राइट? तो इसमें बेसिकली दिस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड एसडीआरएफ, राइट, व्हाट इट डज, हमें एक तो इमीडिएट रिलीफ देता है आफ्टर डिजास्टर, ठीक है, पहला पॉइंटर तो ये, और दूसरा फंड ज्वाइन कराता है सेंटर और स्टेट से, ठीक है, दूसरा पॉइंटर ये, तीसरा इसका स्टैंडर्ड रेशियो है 75:25, ओके, और उसका दूसरा रेशियो है 90:10, ठीक है, इन दिस बेसिस द डिवीजन इज डन, ठीक है। आई होप एसडीआरएफ की सारी पोजीशंस आपको समझ में आ गई होगी। सो एसडीआरएफ के बाद हम लोग बात करेंगे एनडीआरएफ के बारे में। अगेन टेलिंग यू, राइट ऑल द कीवर्ड्स, नो पॉइंट इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन। Okay, so I just hope that you know what SDRF is. After SDRF, we are going to study about National Disaster Response Fund, that is NDRF. अब जब हम NDRF की बात करते हैं तो इट इज लाइक फुल्ली फंडेड बाय सेंटर। यहाँ पे किसकी अकाउंटेबिलिटी थी? यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों की थी, राइट, बट हियर इट्स ऑल अबाउट सेंटर, फुल्ली फंडेड बाय सेंटर, राइट। तो जब भी कोई बहुत सीवियर डिजास्टर होता है, राइट, देन कम दिस NDRF, ठीक है। तो दिस जब भी छोटा या कोई कुछ होगा तो SDRF is sufficient, right? But whenever there is a big disaster, then we require NDRF. So I hope the difference is clear to you. SDRF, NDRF. Is there anything? Okay. अब करंट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या हुई है? सो प्रॉब्लम ये हुई है कि जो डिसीजन मेकिंग हुई है, राइट, इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक एंड नीड दीज बेस्ड ऑफ लाइक डिवीजन, दैट सेंटर शुड लाइक डिसाइड एंड रिलीज द फंडिंग्स, दैट फंडिंग दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट, राइट, इट शुड बी रिलीज्ड, राइट। अगर 2,200 करोड़ का कोई नुकसान हो रहा है, उतना ही देना चाहिए, एटलीस्ट उसके आसपास देना चाहिए, बट दैट लाइक दे गिव लाइक नॉट इवन 11% ऑफ इट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उस स्टेट की डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाएगी। And if that state is not developing, right, we cannot do much about natural disaster. They are going to come, right, but we should know how to tackle them, we should know how to respond to them, right, we should know how to manage them. But agar hum wo cheez nahi kar pa rahe, so there is a problem into our system, and the problem could be seen very vividly. So this is why we are reading the news. I hope it is clear to you. तो पहले तुम्हें पता चलता है कि कैसे मिसमैच है, राइट, फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि डिलेज और मिसमैच होने की वजह से क्या-क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, राइट, एंड आफ्टर दिस टेल्स अस दैट आउटडेटेड नॉर्म्स, राइट, आउटडेटेड नॉर्म्स का मतलब है कि कैसे अभी भी हम पुरानी चीजें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो लाइक रिलीफ अमाउंट ऑफ लाइक प्रोसीजर्स आर नॉट अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट इन्फ्लेशन और करंट रिलेशंस,
ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की बात करता है ये, राइट. देन इट टॉक्स अबाउट द एम्बिगुअस डिजास्टर क्लासिफिकेशन आल्सो. लाइक व्हाट इज एम्बिगुअस डिजास्टर क्लासिफिकेशन? सो बेसिकली इट टेल्स अस दैट अफेक्ट्स वेदर एनडीआरएफ एड इज रिलीज्ड और नॉट. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अगेन. ठीक है, जितना नुकसान हुआ है उतना रिलीज हुआ है या नहीं, दिस टेल्स अस दैट. देन वीक स्टेट ऑटोनॉमी. सो स्टेट डिपेंड्स हेवीली ऑन सेंटर, reducing their ability to respond quickly and independently, and that's very true. खुद की डेवलपमेंट कैसे करेंगे if they'll ask for the fundings again and again, और वो उससे मिल ही नहीं रहा है. that development will happen only if we'll have the resources, and that could be not seen because of the center. I hope it is clear कि इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. Okay, now when we talk about frequency and intensity, तो दोनों ही इंक्रीज करते हैं हमारा क्लाइमेट चेंज. ठीक है, और दूसरा ये बताता है कि कैसे हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेन्स जो है आज भी सेंटर पे डिपेंड करते हैं, राइट. एंड दिस टेल्स अस अबाउट द डिलेज और अनप्रेडिक्टेबिलिटी. अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज द कीवर्ड्स दैट आई एम टेलिंग यू, राइट इट डाउन एज मच एज यू कैन. मैं कम से कम एक न्यूज में लाइक देयर आर प्लेंटी ऑफ कीवर्ड्स आई एम कमिंग अप विद, एटलीस्ट 20 to 30 कीवर्ड्स आर देयर. सो इफ यू कैन राइट एटलीस्ट 5 or 7, that will be sufficient for your answer. So make sure that you are writing all the articles, all the management, and all the like keywords that I'm mentioning. I hope इतनी न्यूज का आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है. So 2024 में ये हुआ था. ठीक है, लाइन और ये इम्बैलेंस शो करता है, एंड दिस टेल्स अस की प्रॉब्लम इतनी पैसों की हुई थी, राइट, फॉर दिस करोड़, बट center released only this much of funding, right, and this shows a mismatch race, right, between the center and the federalism that we talks about, that we have discussed, right. So I hope this is clear to you. Then we learned about Disaster Management Act, what it does, what its features are, why do we study this. I hope it is also clear to you. Then about NDRF and SDRF, very important. It is going, you are going to listen to these two things again and again, and I'm telling you again, like there is like 2 or 3 news that is coming from this natural disaster. So UPSC or any government examination is going to, for sure, they are going to ask questions from this. और केस स्टडी में तो डेफिनेटली आता ही है हर दूसरे साल में, राइट. तो जो 2 क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडीज में वो यहीं से आते हैं, राइट. सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग एंड एनालाइजिंग दीज एग्जांपल्स, क्योंकि केस स्टडीज में ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, राइट. Now I hope that you understood what the problem is, right. Aid was not released, right, and this tells us about the delays and mismatch and outdated norms की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. Then about the classifications also, कि कैसे अभी भी आज के टाइम पर भी state have to be like dependent on central, like fully, right. Now I hope that it is clear. Is there anything? Okay, thank you. So now let's understand another news. So delay in getting syntactic form from France hits India's Samudran mission. Very important, because this news is going to tell us about development. This news is going to tell us about the dependency. This news is going to tell us about the relations, and this news is going to tell us what the new things that we are doing for our country, like what in development we are doing. Okay, now पहले स्टोरी जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, अब ऐसे करो कि imagine that India is preparing to send very special deep sea, that is called submarine. ठीक है, वो ओशन में भेजने की तैयारी पर है उसे, लड़ने के लिए नहीं, not to fight, not for wars, but to explore the unknown depths. ठीक है, search for minerals, study sea life, या फिर मान लीजिए कि ये समझने के लिए कि 6000 मीटर के नीचे एग्जैक्टली है क्या, what is under 6000 meter depth, like what is there, right. So that's exactly what this Samudran aims to do using a submarine called Matsya 6000. Now because वो जो उनकी डेप्थ है, राइट, अकॉर्डिंग टू द डेप्थ दे हैव टेकन द नेम 6000, तो जिसका नाम है मत्स्य 6000, राइट. सो दिस द स्टोरी इज द बैकग्राउंड स्टोरी. ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि मत्स्य है क्या. अब प्रॉब्लम क्या हुई है, व्हाई दिस इज न्यूज. सो दिस मिशन हैज लाइक अ हिट स्नैप. क्यों है, क्योंकि क्रिटिकल कंपोनेंट्स, राइट, जैसे कि syntactic form cladding, this syntactic form cladding, न्यूज सारी इसके ऊपर बेसिस है, राइट. So this helps the submarine floats and maintain, buoyancy underwater, and it was being sourced from abroad, बाहर से आ रही थी, and that delivery, right, that delivery has been delayed. So because of this, a major test dive planned earlier has been postponed.
ठीक है, अब हमारे इंडिया के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज इट वाज टेलिंग समथिंग अबाउट आवर रिसोर्सेज, इट वाज अबाउट टू give us something new information, right, it was about to tell that how innovative we are, like we are doing something in our country, worldwide भी like recognition मिलता हमें, right, but because of this delay अब कहीं ना कहीं we have to pause, right, so why this news is important to us, because इंस्टेड ऑफ गोइंग अहेड इन दिसंबर 2024, 2024 से जाने से पहले, राइट, जो कि ओरिजिनली प्लान हुआ था, द फर्स्ट बिग ट्रायल आर नाउ लाइकली टू हैपन अराउंड मिड नेक्स्ट ईयर। इतना ज्यादा गैप हमें देखने को मिलेगा, बाय बिकॉज जो बाहर से हमारे पास दिस फॉर्म वाज कमिंग, इट इज पोस्टपोन नाउ, इट इज नॉट कमिंग राइट नाउ, राइट, इट इज डिले, राइट, फॉर दिस रीजन, कि मतलब ये है कि जो काउंटडाउन टू सेंडिंग द पीपल डीप अंडर सी हैज बीन पुश्ड बैक। So this isn't just a technical issue, small technical issue nahi hai. This story tells us about a lot, right? It reveals something very deeper to us. Even advanced missions are there, right? That how we are globally, dependent, and this is like a supply chain. कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ connected है, and how we are still dependent on each other, right? And these imported specialized materials and international cooperation, why they are needed, why there is a requirement of these, right? For a project like this Samudrayan, right, which aims to make India one of the few nations in the world and capable of deep sea human exploration, so such dependency shows that how ambitious the mission is and the challenge of achieving this self reliance, right, this is what it tells, है ना? तो अब ये तो हमारी हो गई बैकग्राउंड स्टोरी कि प्रॉब्लम क्या है and what the issue is, right? Now let's understand more deeply that what is Samudrayan. So Samudrayan is India's manned deep sea. Now this is meant because there will be people in this. It's not that we are just sending, this machine there. Manned, it will is a manned deep sea, like submarine mission. So part of the deep ocean mission under the Ministry of Earth Science, MOEC, again telling you, please write all the definitions, all the keywords, and all the like words that I'm coming up with. So MOEC, which is Ministry of Earth Science, right? Under this condition, under this mission, so we have decided कि हम ये manned deep sea को submarine में भेजेंगे, right? So the main vehicle is called Matsya 6000, ठीक है, जो capable है of carrying 3 people to depth of 6000 meters, carrying again 3 people, 3 लोग इसमें जा सकते हैं, right? तो अब बात करते हैं कि इस मिशन का एम क्या है, why this mission is required to us. पहला तो ये है कि इट विल हेल्प अस टू एक्सप्लोर डीप सी, ठीक है, कि जो हमारी पॉलिमेटिक मॉड्यूल्स है वो कैसी है, ठीक है। दूसरा मरीन डाइवर्सिटी, अनदर इंपॉर्टेंट वेरी न्यूज, हमारी मरीन डाइवर्सिटी, ठीक है, उसके बारे में हमें नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तीसरी हमारे पास होगी कि एडवांस्ड ओशन साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चलेगा, राइट। और चौथी चीज हमें पता चलेगी कि ब्लू इकोनॉमी एम्बिशियस कितना ज्यादा जरूरी है। इन दी लास्ट करंट अफेयर ऑल्सो आई मेंशन व्हाट ब्लू इकोनॉमी इज। किस किस को याद है ब्लू इकोनॉमी? Who remember this blue economy? So blue economy is when we are using all the sea resources, right, efficiently with sustainable, and we are not exploiting them, right, and when we are working towards it, ठीक है, उसको हम नहीं कर रहे हैं और उससे हम जितना जनरेट इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं, we are generating that, that's blue economy. I hope it is clear to you. Okay, अब बात करते हैं बजट और टाइमलाइन की। तो जब हम बजट और टाइमलाइन की बात करते हैं तो जो डीप ओशन मिशन है, राइट, उसका बजट है हमारा 4070 का, ठीक है, इतना बजट है हमारे पास। और 5 साल से फ्रॉम 2021 से 2026 तक का टाइमलाइन का वक्त दिया गया, राइट। तो समुद्रायन हैज लाइक अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट विद दिस मिशन, इट फोकसेस ऑन मैन डीप सी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, सिर्फ मशीन नहीं जा रही, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर विद द मैन पावर। आई होप इट इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। ओके, अब डिले हो गया, ठीक है, कि इंडियाज डिपेंडेंस ऑन स्पेशलाइज्ड इंपोर्टेंट मटेरियल्स, ठीक है, डीप ओशंस एंड दिस प्रेशर टेस्टिंग, दिस सर्टिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बाहर से अभी भी हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। सो दिस शोज डिपेंडेंसी समवेयर, लाइक वी आर डिपेंडेंट, राइट। सो इफ यू हैव टू राइट in the news about the dependency or how this world is connected or how technically we need outer exports, तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं। ओके, तो अब स्ट्रेटेजी और साइंटिफिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं।
तो पहले तो डीप ओशन जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इंडिया कैन लाइक आइडेंटिफाई ऑल द वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है, हमें वो सारी चीजें पता चलेंगी। दूसरा साइंटिफिक नॉलेज को एक्सप्लोर करेगा, एनहेंस करेगा, राइट। तीसरा की स्ट्रेंथ करेगा इंडिया पोजीशन इन द ग्लोबल ओशन रिसर्च आल्सो, लाइक दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग लाइक दिस विल बी हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट। सो कहीं ना कहीं हमें रिकग्निशन भी मिलेगा, राइट। देन दिस विल शो पावर ऑफ अस आल्सो, राइट। So this report promote like sustainable utilization of marine resources. Okay, another blue economy initiative. Again, blue initiative economy and this sustainable utilization of marine resources. Another two important words. Please write it down. Up, why we are reading this paper? We are reading this paper because this paper is important for GS paper 3, right? Which is science and technology and economy and environment, right? It tells us about the deep sea exploration also, about the technology also, about the ocean resources also, about blue economy also, right? और उसके बाद हमें बताता है कि indigenous tech development और challenges क्या क्या face करने पड़ते हैं, हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, right? All these things are mentioned in the paper and it is very important for GS paper 3. I hope it is clear to you. Okay, now moving on. Another important news. So, ahead of Kashmir Tamil Sangam, PM Modi hails cultural unity of on Man Ki Baat. Okay. तो ऐसे इमेजिन करो इंडिया के दो पार्ट, एक इधर एक इधर, and if you are in India, diversity is there. There are lots of communities there, right? Lots of fights are there. तो ऐसे होता है ना कि एक घर में like बहुत सारे बर्तन हैं बजते रहते हैं, ठीक है? तो इंडिया इज लाइक दैट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल अराउंड अस, राइट? तो इन सब की वजह से, ठीक है, अब कल्चरल बैरियर इट कुड बी सीन, कभी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, कल्चर बैरियर इज देयर, लाइक वी फाइट ऑफन but we are staying under the same roof. That's a big thing, no doubt in that. But then again, we are fighting a lot, ठीक है? उसकी वजह से गवर्नमेंट अलग अलग इनिशिएटिव लेकर आती रहती है, राइट? So imagine करो कि this part of India, like one far is like north, like a city that stays like ancient, spiritual, full of its history, ठीक है? और जिसका नाम है हमारा वाराणसी, यहाँ पर लिख देते हैं वाराणसी नॉर्थ। वाराणसी की अपनी अलग कहानी है, ठीक है, इट्स ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे, राइट? सो अनदर इन द डीप साउथ, ठीक है, और रीजन यू नो विच इज स्टेप्ड इन इट्स ओन लैंग्वेज और उसका एक अलग ही कल्चर है, राइट, विच इज तमिलनाडु एंड हियर इज तमिलनाडु। दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट। नॉर्थ में साउथ के बाद में जितने हमें लड़ाई को देखने मिलती है, इट्स अबाउट लैंग्वेज ऑल्सो, about the culture. There's a lots of news that people are fighting about these, है ना? So this is why it is very important for Indian society. It is very important for ethics. It is very important for many examinations that we are going to discuss about, because it tells us that about the diverse nature of our country. It tells us about the community and about the barriers and what we can do, what initiative government is taking, and what initiative we can do. Right? This tells us about that. Right? सो आपने इमेजिन करा कि एक तरफ वाराणसी है, दूसरी तरफ हमारे पास तमिलनाडु है, राइट? फॉर सेंचुरीज लाइक बोथ हैव ए रिच एंड वेरी डिस्ट्रिक्ट सिविलाइजेशन, ठीक है, बहुत अलग अलग ट्रेडिशंस उनके रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है, और दोनों ने ही हमेशा अपनी वैल्यू शो करी है इन लाइक कमिंग टाइम आल्सो। नाउ देयर इज दिस नेशनल लेवल इनिशिएटिव टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम तमिलनाडु एंड वाराणसी दोनों को साथ में, राइट, टू डिस्कवर and to celebrate this heritage, about each other's culture and language traditions. So this initiative is Kashi Tamil Sangam. So this Kashi Tamil Sangam, right, it is like the togetherness of these two cultures, एक north का और एक south का, ठीक है? इतना समझ में आया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, वो भी will try to understand. But is it clear to you that why we are like what we are talking about? Okay. अब हुआ ये है कि December 2, right, 2025, this spirit purpose remain the same. So Narendra Modi in his monthly address urged each and every citizen, what did he say? He said that to take this part in this event so that people can come together, so that people can like forget the barrier that they were having, these language barriers. Especially we heard so many cases where people were like fighting each other for their languages, right? So to remove these barriers, what government did, they took this initiative, they come with this, right? So पूरा लैंग्वेज और कल्चरल रीजन देखने को यहाँ पे मिलेगा, एंड द थीम ऑफ दिस ईयर इज तमिल करकलम।
Tamil Karkal. Any idea what it means? I mean, I'm sure that South people can like understand what this means. But this Tamil Karkalam means that learn Tamil. Iska matlab hai that people will like, especially from North India, right, or Kashi, they get a chance to know about the Tamil language and to get exposed to Tamil culture, like to know what like South reality is and how people there are, right? What kind of like treatment they give and about the humanity also, right? So इस संगम के दौरान पे it is very delicate from Tamil Nadu and delegate for Tamil Nadu क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स आएंगे, टीचर्स आएंगे, आर्टिस्ट आएंगे and they'll travel to Varanasi. There they will visit temples also, they'll perform cultural programs, बहुत सारे seminars होंगे and they will meet their locals, right? और experience करेंगे कि life काशी में होती कैसी है, right? So on the other side, people in Kashi get to experience Tamil and art culture also, about the cuisines, about the festivals और बहुत सारी चीजें. So it's like a meetup that is coming up together. And as I said before also, like there was a barrier between north and south that was going, right? काफी news में था, and like there were lots of current affairs also which I've covered on that news also. तो ये जो काशी और तमिल का संगम है, like it's a fourth edition 2026, right? So this thing of Kashi Sangam like as a big cultural, you know, reunion between like two of India's oldest civilization. पहला तो काशी north में और तमिलनाडु south में, ठीक है? तो this fourth edition of the Kashi Tamil Sangam, this started on 2 December 2025 in Varanasi, और ये कोई नया event नहीं है, it has been happening every year since 2022, ठीक है? हर 2 साल में हर साल में होता है, right? तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग लोग आते हैं, लाइक 1000 पीपल कम टुगेदर फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है? अलग अलग लोग आते हैं और यहाँ पे एक दूसरे के कल्चर को शेयर करते हैं. नॉर्थ को साउथ को पता चलता है और साउथ को नॉर्थ का पता चलता है, ठीक है? तो इस बार का जो थीम है, हमारा थीम है दैट इज तमिल करकलम, दैट इज लेट्स लर्न तमिल, ठीक है? तो थीम का जो फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन लर्निंग द तमिल लैंग्वेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग तमिल लिटरेचर और तीसरा होगा दैट अप्रिशिएटिंग तमिल्स आर्ट्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है? ये सारी चीजें होंगी. अगर हम वहाँ पे साउथ को भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली साउथ विल आल्सो बी एक्सपोज्ड विद देयर कल्चर एंड वी विल आल्सो गेट टू नो अबाउट देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द वे दे बिहेव, राइट? तो इसका प्रोग्राम का एम ये है कि सेंटर को आइडिया मिले, ठीक है, कि लोगों को बेसिकली लोगों को लेकर कैसे आना है, ठीक है, कि तमिल के लोगों को वाराणसी में कैसे लेकर आना है एंड हाउ दे हैव टू लाइक कम विद द मीट, क्योंकि दोनों ही रीजन्स के बहुत ज्यादा डीप कल्चर्स है. लाइक इफ वी गो बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, सो वी नो दैट they are deeply rooted in their culture, right? So this sangam, this tries to like build friendship, they are going to share traditions, they are going to exchange knowledge also, they are going to celebrate food also, right? About the music, art, right? All of these together, and this strengthens the feeling of the one India, right? क्योंकि diversity जितनी इंडिया में है, you will not see anywhere. Like we have each and every religion that you can think of, right? So इसीलिए इतनी diversity होने के बाद भी, yes we do fight, right? We have barriers, but still we are staying under the same roof, and that's a big thing, right? So इसीलिए कभी-कभी ज़्यादा जब barrier हो जाता है, so government come with these initiatives, right? To remove the barriers, to engage with each other, to know their culture, to make it more united, right? So this is why it is very important that these examples are mentioned in the way and the keyword that I have mentioned to you. Yes, exactly. Unity in diversity. Very good. Okay. अब why Kashi and Tamil Nadu? तो बेसिकली दिस टाइमलेस सेंटर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एक्सप्लोर्ड, ठीक है? क्यों? क्योंकि काशी जो है हमेशा कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, काशी इज ऑफन कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है? एंड इट इज वेरी फेमस फॉर स्पिरिचुअल्स, फॉर टेम्पल्स, फॉर म्यूजिक, अपनी संस्कृत लैंग्वेज की वजह से, अपने एंशिएंट ट्रेडिशंस की वजह से, राइट? इट इज लाइक इट हैज बीन इन द न्यूज़ फॉरएवर, राइट? जब हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग कल्चर ऑफ इंडिया, राइट? व्हिच इज रिच तमिल लिटरेचर, राइट? व्हिच इज अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर, अबाउट द क्लासिकल म्यूजिक, है ना? एंड अबाउट द डांसेस आल्सो, राइट? भरतनाट्यम जैसे कि हम ले सकते हैं, राइट? सो दिस टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कल्चर, राइट? दोनों के समझ में आया दैट व्हाई वी आर टेकिंग दीज टू स्टेट्स ओनली? इज इट अंडरस्टूड? So now what is the broader message here that this news is coming up with? तो broader message ये है कि this संगम supports the national vision of एक भारत श्रेष्ठ भारत. Another important word, एक भारत श्रेष्ठ भारत. One nation, united nation. Or one India, great India, right? So it means that different states learn from each other, people understand each other's culture, और दूसरा national unity becomes very stronger through cultural bonds, right? तो इंडिया का जो हेरिटेज है, right, this celebrated at one shared civilization,
ठीक है। अब पिछले साल 2022 में भी ये हुआ था, ठीक है। 2022 में क्या हुआ था, पहले वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हुआ ये कि थाउजेंड ऑफ पीपल, राइट, सो थाउजेंड ऑफ पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, जैसे कि स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया, वो लोग आए, राइट, एंड दे ट्रेवल टू काशी एंड दे पार्टिसिपेटेड इन वर्कशॉप्स। उन्होंने टूर किया, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, राइट, देयर वर सेमिनार्स, टेंपल विजिट भी थी, और ये सारी चीजें होने लगी। तो काशी तमिल संगम जो अभी 2025 में हो रहा है, वो कल्चरल फेस्टिवल में दिस ब्रिंग्स टुगेदर टू एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस, काशी और तमिलनाडु को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और अब ये रेलेवेंट है जीएस पेपर 1 के लिए, बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। और ये हमें बताता है कि इंडियन की सोसाइटी हाउ इट वर्क्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2 आल्सो, राइट, as it tells us about the polity and social justice also. In social integration also it is very important. Another, in social identity, in national identity and unity, it is important. That why government is taking such initiatives, if barrier could be seen in the society. As I said again, and I'm again repeating it, ki there are like conflicts in India, right? Because of the diversity, because of so many cultures, because of so many language, the barrier could be seen. It is in the news every single day, every other day. It is there. But then again, government takes such initiatives, you know, to remove these barriers, to remove these differences, right? And in government examination, like in all the government examination, there is not a single paper where it has not been asked कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेती है अगर इतना बैरियर देखने को मिलता है, बिकॉज वी हैव सच डाइवर्सिटी. So these are the examples that you have to write, and the current sorry, the keywords that I have mentioned to you. I hope it is cleared. And is there any confusion or doubt you have? Okay, moving to the next news. Okay, another very important news, please do not miss it. So news है that new finds highlight Great Nicobar project sites biodiversity. So imagine, you know, a remote tropical island, ठीक है, very dense, बहुत ज्यादा evergreen, ठीक है, और like there is like rain forest, ठीक है, coastal breaches है, right, there is like coral reefs also, ठीक है, wetland is also there, largely untouched, किसी को नहीं पता, it's like full of hidden life, जितनी biodiversity you can imagine it's there, जितना एक्सप्लोर हमने कभी किया ही नहीं है, लाइक स्पीशीज को, इट्स इन दैट आइलैंड, राइट, इमेजिन दिस. सो दैट्स ग्रेट निकोबार टू अस. तो अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया है कि इस आइलैंड में नई स्पीशीज की डिस्कवरी हुई है, ठीक है. नाउ व्हाई वी आर रीडिंग दिस न्यूज, व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, एंड व्हाट्स द लिंक बिटवीन द पेपर्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है. अगर कोई नई स्पीशीज हुई है तो व्हाई दिस आइलैंड इज इंपॉर्टेंट टू अस, राइट, एंड वी आर गोइंग टू लिंक इट दैट व्हाट गवर्नमेंट विल डू and what government had done with these like such kind of islands, right. तो ये सारी चीजें हम लोग कंपेयर करके समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो दिस शोज दैट दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड इजंट जस्ट अ रिमोट डॉट ऑन द मैप. सिर्फ एक जगह नहीं है ये मैप पर, राइट, इट्स मोर देन दैट, राइट, इट्स अ लिविंग ट्रेजर, यू नो, लाइक समथिंग like chest of biodiversity. It's more than that, right. So because of these discoveries, अभी क्या हुआ है कि this area proposed for mega infrastructure development, right, जैसे कि port, airport, township, etc., that government was taking part of, right, it basically tells us that should we do this or not, right, this questions this, right. So, and again I'm telling you, in case studies there are lots of questions that has been asked, right. दो questions तो case studies से हमेशा आते हैं, and again I'm telling you, do not take case studies lightly. दो questions हमेशा case studies से आते हैं कि हमेशा development or this, you know, management, like in which this dilemma that they come up with, so you have to choose wisely, so you can write this current affair. So this is why it is very important, so please listen to this very carefully. तो ये डिस्कवरी हमें बताती है कि जो हमारा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, राइट, वो रिन्यूड स्क्रूटनी के अंदर आता है, राइट, इफ वी शुड डू दिस और इफ वी शुड नॉट डू दिस, बिकॉज नई नई स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिली है, एंड दीज स्पीशीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दो स्पीशीज टू. सो नाउ बेसिकली अब इस डिस्कवरी की वजह से हमें ये तो पता चल गया है कि देयर इज लाइक दिस डिलेमा दैट शुड वी लाइक मूव विद इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर हम लोग मूव ना, ठीक है. And now this the fact is that these new species are still being found, you know, they highlights that how fragile and how precious the island ecosystems are, and that any large scale development could, you know, endanger not only these known species but ones we haven't even discovered yet. There are still many discoveries yet to make, ठीक है. अभी कुछ डिस्कवरीज हुई है which are very shocking to us because they are not found anywhere in the world, and still there are discoveries which are yet to be found. So this tells us that how much important this island is to us,
right? And what government is going to take initiatives? Is this, are they like going to move towards the development, या फिर वो वहीं पर रुककर उन species को like explore करेंगे, right? This is the questions that we are going to come up with. And case study में it's more like analytical questions right now, so make sure that you are analyzing these news accordingly. अच्छा, इतना में समझ में आ गया कि ग्रेट निकोबार जो है इज नॉट ओनली लैंड फॉर डेवलपमेंट, बट ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और इट्स लाइक फुल ऑफ रेयर, लाइक पॉसिबली बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज है, एंड इट टेल्स अबाउट द रीसेंट फाइंडिंग्स आल्सो दैट हैव बीन ब्रॉट टू द लाइट अगेन, राइट? एंड दिस आइलैंड हैज बीन लाइक नाउ इन द स्पॉटलाइट अगेन, ठीक है? तो अब जो नई डिस्कवरी हुई है ग्रेट आइलैंड में, राइट, ये बेसिकली साइंटिस्ट मेड एंड एक्साइटिंग डिस्कवरी इन द ग्रेट आइलैंड, और वो डिस्कवरी ये हुई है कि वहां पे एक नई स्पीशीज पाई गई है, लाइक स्पीशीज ऑफ वोल्फ स्नेक, ठीक है, विच दे हैव नेम लिकोडेन इरविन. This Lycodon irvini, so this is a new species that has been found. So बहुत ज्यादा like remote पे मिलती है, ठीक है, ecologically rich island है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज मिली है, right? So they found this new species and this Lycodon irvin, right? It's a new discovered type of wolf snake. तो इसकी जो length है that is 1.2 meter. ठीक है, 1.2 मीटर का ये स्नेक है, राइट? और बहुत ग्लोसी सा और बहुत डार्क सा इसका कलर है, एंड वेरी ब्लूइश ब्लैक कलर ऑफ पैचेस आर देयर, ठीक है, एंड इट इज लाइक अ स्लेंडर विद अ थिन, ठीक है, टेपरी टेल है इसकी, एंड इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर वॉल्फ स्नेक, ठीक है, दैट साइंटिस्ट लाइक ऑलरेडी नो, बट इट इज वेरी वेरी प्रीशियस टू अस, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये यूनिक है, क्योंकि साइंटिफिकली कुछ भी ऐसा डिस्कवर करना विच इज नॉट एग्जिस्टिंग समवेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एंड अनदर थिंग इज दैट वी हैव टू प्रिजर्व इट. This dilemma is there, right? So this is why it is important to cover it in that way. अब ये जान लेते हैं कि जो ये स्नेक हमें मिला है, राइट? सो दिस स्नेक इज लाइक मोइस्ट एवरग्रीन, राइट, फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, और ये साइंटिफिक लिंक क्यों है? बिकॉज इट इज एंडेमिक. ओके, मतलब ये जो है इट लिव्स ओनली इन द आइलैंड, ओनली दिस आइलैंड एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. दिस इज एंडेमिक, यहीं पर है ये, इसके अलावा कहीं और भी नहीं. एंड नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, so somewhere we'll be using these kind like misuse, basically losing these kinds of species, ठीक है, and it's the dilemma that government is facing. तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि like what government should do in this case, ठीक है, I'll be waiting for your answer and we'll discuss more about this there, ठीक है. अब पहला में समझ में आ गया दैट दिस इज एंडेमिक, मतलब कि ये सिर्फ यहीं पर, सिर्फ इसी जगह पर रहता है और कहीं पर किसी वर्ल्ड में, मतलब किसी भी जगह पर नहीं रहता. दिस इज एंडेमिक, राइट? सो इट्स हैबिटेट इज वेरी लिमिटेड, ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है हमारे लिए, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस रिसर्चर्स सजेस्ट दैट इट शुड बी क्लासिफाइड एज इंडेंजर्ड फॉर नाउ, क्योंकि ये कहीं और है ही नहीं एंड इज द ओनली वन दैट वी हैव फाउंड, सो वी शुड कंसीडर इट इंडेंजर्ड, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अब ये जान लेते हैं कि कितना ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ऑफ ग्रेट निकोबार. तो ग्रेट दिस निकोबार इज लाइक अ नेचुरल ट्रेजर बॉक्स फॉर इंडिया, क्योंकि अगर हम बायोडाइवर्सिटी फैक्ट से इसको देखा जाए तो बेसिकली इट हैज लाइक हंड्रेड्स ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक है, और कम से भी कम 1000 एनिमल स्पीशीज यहाँ पे है, 1000 स्पीशीज विच इज अ लार्ज नंबर, ठीक है, which tells us that we have to preserve it, which tells us that how important they are, which tells us that government have to do something in like for them. Ab this happens because the sorry this happens because the island has many different ecosystem packed in one place, ठीक है, tropical rainforest, wetland, right, this coral reefs also, about the rivers and streams also, right? So this makes it one of India's most ecological sensitive regions for us, ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा sensitive हो जाते हैं, and this is why we are reading this news to see the government, like what government is going to do, what initiative they are going to do. And again I'm telling you, please, I'll be waiting for your answer, like do tell me in the comment section like what the government should do according to you, because this is what in ethics case study has been asked कि तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए. So I want to know what you think about this, what you think like government should do, and if you were in the position of the government, what you would have done, ठीक है, क्या क्या initiatives लेने चाहिए. अब
इसी के साथ साथ में ठीक है डिस्कवरी हो गई है, देयर इज अ वोल स्नेक दैट हैव बीन फाउंड, इतने इतने मीटर का है, दिस इज द न्यूज, दिस इज द बैकग्राउंड हिस्ट्री, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि देयर इज अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन द ग्रेट निकोबार, ठीक है, डिलेमा इन दोनों के बीच हुए हैं। तो एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड अ मेगा प्रोजेक्ट ऑन द आइलैंड कॉल्ड द ग्रेट निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि प्रपोज करता है हमें एक तो दिस ट्रांसमिशन एयरपोर्ट्स, राइट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, हमारी टाउनशिप और हमारा पावर प्लांट, ठीक है, और इसी की वजह से वी हैव टू स्टॉप द डेवलपमेंट, ठीक है। अब दिस इज द डायलेमा। अब अगर तुम बोलोगे कि मैम लाइक वी शुड स्टॉप द डेवलपमेंट, तो प्रॉब्लम किसके बीच में है, एक तो डेवलपमेंट के बीच में और एक बायोडाइवर्सिटी के बीच में। नाउ इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट कि मैम देखो अब अगर यहाँ पे इतने सारे स्पीशीज मिल रहे हैं एंड दैट स्पीशीज व्हिच आर नॉट फाउंड एनीवेयर, ठीक है, तो आई थिंक वी शुड लाइक लीव इट देयर, राइट, लीव दोस स्पीशीज देयर बिकॉज वेरी प्रीशियस टू अस, ठीक है, एंड इट समवेयर टेल्स अस अबाउट द ज्योग्राफी आल्सो व्हेनेवर दैट snake whole snake will be mentioned, right, our country's name will be there, so we'll get the recognition, right, so इसी वजह से हमें जो है डेवलपमेंट को अभी रोक देना चाहिए, ठीक है, बट इफ वी आर लाइक लीविंग डेवलपमेंट फॉर नाउ, लॉन्ग टर्म के लिए विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, अगर तुम डेवलपमेंट रोक रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगी, फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगी तो इट मींस वी आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर आवर डेवलपमेंट, वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स एज अ फास्ट नेशन, तो ये सारे क्वेश्चन रेज करता है। अब अगर आप बोलोगे तो ठीक है फिर डेवलपमेंट कर लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो जाता है, बट व्हाट अबाउट द केसेस दैट यू हैव टोल्ड, ठीक है, तो यही सिचुएशन है एंड देयर शुड बी अ सॉल्यूशन व्हिच शुड बी like come up with a balance between these two, और यही यूपीएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जानना चाहता है कि आपका कितना ज्यादा बैलेंस अप्रोच है, understood, so whenever you are facing such kind of dilemmas in the answer, make sure that you are coming with a balanced approach. I hope this is clear to you and I hope that you know how to answer such kind of questions. Is it understood? ठीक है, अब इन्वायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स है वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट, राइट, दे वांट कि जो प्रोजेक्ट है ये डैमेज कर सकता है फॉरेस्ट को, डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारी कोरल रीफ्स को और हमारी दिस वेटलैंड्स को, राइट, आफ्टर रेयर एंड एंडेमिक स्पीशीज लाइक दिस लाइकोडोन इरविन, राइट, जो हमें मिला है अभी, राइट, इट इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट देम, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, और ये डिस्टर्ब करेगा हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द आइलैंड आल्सो, ठीक है, जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करेगी, इसीलिए हमें जो सोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बैलेंस अप्रोच से लेकर चलना पड़ेगा। आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जहां पे नए नए स्नेक्स और स्पीशीज हमें डिस्कवर करने को मिल रही है, बट दिस इकोलॉजिकल रिच एंड फ्रेजाइल रीजन्स फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम अ लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, you know, that could harm its sensitive ecosystem, right, this is why this great Nicobar matters to us and this is why we are talking about it. Understood till here? I hope there is no confusion. I hope that everything is understood till here. I hope that you know how you have to come up with the balance approach. I hope that you should know that what kind of balance approach you should come up with. So हमें समझ में आ गया कितने सारे स्पीशीज वहां पे मिले हैं, राइट, एंड अराउंड 24% ऑफ एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड, ठीक है, और जो कहीं पर नहीं मिलते हैं, राइट, दैट आर फाउंड इन दिस निकोबार एंड इट इज व्हाई इंपॉर्टेंट टू अस एंड दिस इज व्हाई दीस इन्वायरमेंटलिस्ट, राइट, दे आर कंसर्न्ड कि डेवलपमेंट तो करो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दीस बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज, प्लीज डू कंसीडर देम, राइट, बिकॉज क्योंकि नेचर भी इंपॉर्टेंट है, राइट, लॉन्ग टर्म फ्यूचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो देयर शुड बी अ बैलेंस अप्रोच दैट शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट. So this is it for today and I'll meet you in the next class and I'll be waiting for the answer that for the question that I've asked you and we'll have more discussion there. So with this I'll sign off and I'll see you tomorrow.